Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq, Unit 10, How to Use Would Not Be. Would not be explained in Urdu and Hindi. Let's see. This lesson is written by Sister Jannat and recorded by Tariq Aziz. सबसे पहला सेंटेंस देखें. I would not be happy if I got bad grades in math. देखें, हमने it would be पढ़ा था. आज हम I would not be भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा मैंने आपको would के इस्तेमाल सिखाया है और उसमें be का भी इस्तेमाल सिखाया है. इसके 10 लेसन हो गए माशाल्लाह से. ये 10वां लेसन है. I would not be happy, मैं खुश नहीं हूँगा, क्योंकि ये सारी पॉसिबिलिटी होती हैं, यानी जो हुआ ना हो, यानी आप पहले से सोच रहे हैं, पहले से इमेजिन कर रहे हैं कि आप ये होगा तो क्या होगा, ये ऐसा होता तो वैसा होता, ऐसा होता तो क्या होता. हम अक्सर लोग सोच सोच के परेशान होते हैं, जो हुआ ही नहीं उसके लिए परेशान हो रहे होते हैं. तो ये भी इसी तरह है. आई वुड नॉट बी हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँगा, इफ़ आई गॉट बैड ग्रेड्स इन मैथ, अगर मेरे मैथ में ग्रेड्स अच्छे ना बने हों. अगर मेरे ग्रेड्स अच्छे ना बने तो मैं खुश नहीं हूँगा. ये एक कॉमन सेंस है. अगर आपके मैथ में सी ग्रेड बना है तो आप खुश हो गए? नहीं खुश हो गए. लेकिन मैं खुश होता था, मेरा सी ऑलवेज सी बनता था. आई वुड नॉट बी हैप्पी इफ़ आई गॉट बैड ग्रेड्स इन मैथ, मैं खुश नहीं हूँगा अगर मेरे ग्रेड्स जो हैं वो मैथ में ख़राब आए. सही है. नेक्स्ट देखें. इट वुड नॉट बी फन, इट वुड नॉट बी फन इफ़ योर फ्रेंड फूल यू. मेरी एक सिस्टर हैं, वो अक्सर मुझसे बहुत लड़ती हैं, अक्सर लड़ती हैं कि आप अपनी ना तारीफ़ नहीं कर सकते तो बेइज्जती भी नहीं किया करें. तो ये बेसिकली वही लिखती हैं लेसन. तो उनका सबसे बड़ा ये होता है, जिस दिन मैंने अपनी बुराई की या कुछ की, वो उनका गुस्सा हाई टेम्परेचर पे चला जाता है. सो इट वुड नॉट बी फन, उनका कहना ये है, वो अक्सर ये उनका जुमला है, इट वुड नॉट बी फन, इट वुड नॉट बी फन. ये मज़े की बात नहीं है. इफ़ योर फ्रेंड फूल यू, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें उल्लू बनाते हैं, तो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ, उल्लू बनने के बाद ही इंसान को पता चलता है कि कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा अपना नहीं है. तो पहचान जब ही होती है जब आप बेवकूफ़ बनते हो, और बेवकूफ़ बन के रहने में कामयाबी है, क्योंकि आपको पता चलता है आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है. इट वुड नॉट बी फन, ये कोई मज़ा नहीं है, इसमें कोई मज़ा नहीं, ये कोई तफरी नहीं है. इफ़ अगर योर फ्रेंड फूल यू, अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें उल्लू बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई मज़े की बात नहीं है, कोई मज़ा नहीं है अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक बनाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. इट वुड नॉट बी नाइस, इट वुड नॉट बी नाइस, ये अच्छा नहीं होता, ये अच्छा नहीं होगा, या ये अच्छा नहीं होता. अगर इफ़ यू हैड बैड मैनर्स इन द मीटिंग, इट वुड नॉट बी नाइस, ये अच्छा नहीं होता या ये अच्छा नहीं होगा. इफ़ अगर यू हैड बैड मैनर्स, अगर तुम्हारा रवैया, तुम्हारा तौर तरीका, तुम्हारा बैठना उठना, खाना पीना, रहन सहन, इसको कहते हैं मैनर्स, ये बुरा हो. इन द मीटिंग, जहाँ बातचीत हो रही होती है, दो लोग आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं, वहाँ पर अगर आपका रवैया अच्छा नहीं तो ये कोई अच्छी बात नहीं. इट वुड नॉट बी नाइस, ये अच्छा नहीं अगर तुम्हारा रवैया मीटिंग में अच्छा ना हो. फॉर एग्जांपल, सारे बातों में लगे और आप पेन बजा रहे. अक्सर लोगों की आदत है टिक टक टिक टक टिक टक टिक टक 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 टक. अरे भाई क्या हो गया यार, एक हाथों में कोई कीड़ा है? नहीं भाई, आदत सी है. अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है हर वक्त जमाई लेते रहते हैं. तो ऐसा नहीं किया करें, ये अच्छी बात नहीं है. मीटिंग हो ना हो, लेकिन ये लोग इसको अच्छा नहीं समझते. लेकिन मैं बुरा नहीं समझता, मैं भी बुरा नहीं, क्योंकि मैं क्यों बुरा समझूं? क्योंकि हर इंसान के कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, कोई ना कोई खामी होती है. तो उस खामी को एक्सेप्ट करो और
اگر وہ سدھر سکتا سدھار دو, نہیں سدھر سکتا تو ہیپی رہو. It would not be nice if you had bad manners in the meeting. یہ کوئی اچھا نہیں ہوگا اگر تمہارا رویہ رہن سہن میٹنگ میں اچھا نہ ہو. It would be more fun if you were there. It would be more fun. اوئے ہوئے اور مزہ آئے گا اگر تم وہاں ہوتے, اگر تم وہاں ہوگے اور مزہ آئے گا, زبردست مزہ آئے گا. تم ایک دفعہ چلو تو صحیح. It would be more fun. It would be more fun if you were there. It's my favorite sentence. It would be more fun if you were there. تم ہوگے تو بہت مزہ آئے گا. Because you are my life. You are my everything. You are everything for me. So it would be more fun if you were there. یہ اور زیادہ مزیدار ہو جاتا یہ سفر, یہ کچھ بھی ہے, اگر تم وہاں ہوگے تو. Now golden word. Sometimes you will never know the true value of a moment until it becomes a memory. Sometimes کبھی کبھار you will never know, تم نہیں جان پاتے, تمہیں نہیں پتہ لگتا the true value, اصلی قیمت کا, of a moment, لمحے کا, اس لمحے کی اصلی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا until, جب تک, it becomes a memory, جب تک وہ یادیں نہیں بن جاتی. Sometimes you will never know the true value of a moment until it becomes a memory. اکثر ہم لوگوں کو تانا دیتے ہیں, ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, لوگوں کو یہ سمجھتے ہم نے کچھ کیا نہیں لیکن ہم جان بوجھ کر نہیں, ایک ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم کر رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو طنز کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھار لوگوں کو برا بھلا اتنا کہتے ہیں, لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ یادیں ہمیں تڑپاتی ہیں. وہ کیا بندہ تھا, یا کاش میں اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا, کاش میں اسے طنز نہ دیتا, کاش یار وہ ہوتا. چیزیں ہو یا بندے ہو, ہر چیز جب چلی جاتی ہے جب اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. اور ہم اتنے ناشکرے ہیں کہ جو چیز ہے اس کی قدر نہیں کریں گے, جو نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگیں گے, اور جو ملا ہوا ہے اس کو چھوڑ کر جو نہیں ملا ہوا اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور جو ملا ہوا اس کی قدر نہیں کریں گے, اور جو ملا نہیں ہے اس کی قدر کریں گے, بولیں گے ہم اس کی قدر کریں گے, یا اللہ ہمیں دے دے, یا اللہ ہمیں دے دے. بھائی پہلے جو چیز ہے اس کی تو قدر کرو, جو چیز تمہارے پاس ہے وہ بندہ ہو یا چیز ہو اس کی قدر کرو. Sometimes you will never know the true value of a moment until it becomes a memory. یہ ایک حقیقت ہے, اس کو سمجھیں. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں, مجھ پہ اتنی فیور ضرور کریں, میرے ساتھ اتنی فیور ضرور کریں کہ اس ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن ہوتا ہے, اس کو کلک کریں اور اس میں آپ کو آپشن آئے گا فیس بک کا, ٹویٹر کا, تو جو بھی سوشل میڈیا آپ یوز کرتے ہیں اس پہ وہ شیئر کا اس پہ کلک کریں. آپ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. یہ ایڈریس ہے www.youtube.com/tariqaziz1. If you want to watch more lesson, go to www.youtube.com/tariqaziz1. I hope you will share my video with your friends. Thank you for watching and listening. Assalamu alaikum.